कहते हैं 4.2 जाउल. सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड जाउल. इसके बाद अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जाते हो तो वहां पे एटॉमिक फिजिक्स भी कहते हैं हम केमिस्ट्री की जगह पे. अगर आप फिजिक्स में ही एटम्स की एनर्जी लेवल को कंट्रोल करते हो या देखते हो या मेजर करते हो तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा मेजर की जाती है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल देयर. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ट्रांसफर हो रहा है उसको जाउल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका ये रिलेशन है. सो दीज आर द रिलेशंस ऑफ calories with joule and electrons with joule, electron volt with joule. So up to this we have finished our topic, that is relation of between energy and work. Now fact is there, Albert Einstein defined energy in terms of mass and speed of light. Question can come, who discovered या who defined energy in terms of mass and speed of light? Your answer must be Albert Einstein. So beta, what you have to do first, in the beginning we have done the definition of energy. You have to write the definition as well as you have to underline these definitions. Secondly, definition of work done. Second definition also you can write or in between these two. तो दोनों ही लिखनी है आपने. उसके बाद ये वर्क एनर्जी थ्योरम को मेन हेडिंग बना के, क्योंकि इसको कई बार आता है स्टेट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और थ्योरम, तो ये आपने जरूर लिखना है. उसके बाद 1 जाउल की डेफिनेशन लिखनी है. देन रिलेशन बिटवीन जाउल एंड कैलोरीज, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जाउल. सो दीज are the few of definition which you are going to write on your notebooks. Then I have given you one more question which can come in multiple choice also or one word also, that who defined energy in terms of mass and speed of light? So your answer is Albert Einstein. One word must comes from this. So till this we have finished our topic. So tomorrow we are going to start, that is in next class we are going to discuss different form of energy. By the time what you people are going to do, you will collect different forms of energy with examples from your daily life. Doesn't mean that you can collect from the book only. You have to get the examples from your daily life so that you can remember that how the energy conversion is there. Thank you.